If you have stumbled upon this particular video, it's because या तो you're scared of biryani or you have made biryani before लेकिन इंतहा का मैसअप हुआ है. Either चावल बहुत मैशअप हो गए हैं या वो खिले खिले चावल नहीं आ गए या बिरयानी की जो बोटी है वो बहुत ज़्यादा गल गई है लेकिन वो मज़ा नहीं आया. So you are probably thinking to up your biryani game a little. I am somebody who loves biryani, who craves biryani, and who also has made multiple mistakes while making biryani. That's why I've come up with these 10 tips that I wish somebody could have given me sooner, because whatever recipe you follow, if you follow these 10 tips, I am sure you definitely are going to see wonders in your biryani game. Let's get on to the 10 basic steps. Like भले आप कुछ भी recipe biryani की follow कर रहे हो. By the way, I also have a recipe on my channel which is mutton biryani recipe. सबसे पहले बात करते हैं marination की. So if you're using mutton or beef, marinate your meat beforehand. At least 2 to 3 hours, if not overnight, because it just adds a flavor. It just makes the meat more juicy. Also, this is not a tip but a secret. If you do not like the flavor of the biryani somehow, just try to add some ready-made masala. I particularly love Bombay biryani masala or the Sindhi biryani masala. You can add 1 tablespoon or 2 tablespoon or 1 tablespoon from both the packets. It will just give like a kick of flavor to your biryani. My second tip is to use घर के fried onions. Now I know it is very hard to fry onions बिल्कुल perfect तरीके के, बिल्कुल खिले खिले और हसीन वाले fried onions. But if you cannot manage to make those, then buy from a brand which makes घर जैसे fried onions. You know, बिल्कुल जो छोटे छोटे वाले onions नहीं होते जो package में आते हैं. Don't buy those. There are some brands out there that are giving very nice fried onions जिनकी fragrance, taste भी even बिल्कुल और texture is बिल्कुल घर वाले fried onions जैसा. So use those especially in the layering of the biryani, because उससे ना एकदम मसाला बनता है और वो मसाला उसके साथ end में, मतलब not while cooking but even end में while layering, it just gives like, takes your biryani to definitely a next level. अब जो थर्ड है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लोगों की रह जाती है, वो है चावल. कि जी चावल कैसे खिले खिले हों, वो जो बिरयानी की जो चार्म होती है खिले खिले अलग अलग चावल कैसे हों. सो इफ़ यू आर यूजिंग बासमती चावल, यू हैव टू बी वेरी 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 पर्टिकुलर कि किस लेवल पे. यूजुअली 80% लेवल पे निकालते हैं, बट अगेन इफ़ यू आर नॉट अ प्रो, इफ़ इट्स लाइक फर्स्ट सेकेंड टाइम कुकिंग, पता नहीं चलता कि वो कैसे वो 70-80% निकलती है. सो यूज़ Sela rice. Now Sela rice also has a trick to use, because Sela rice are longer rice than basmati rice and they take longer in cooking, and they still, even after cooking, they still like leave a smell, a taste, an aftertaste which I didn't like the first time I cooked it. I came to this conclusion that soak your Sela rice for at least 4 to 6 hours. At least 4 to 6 hours. उससे जो है ना वो टेस्ट चला जाता है Sela rice का, and it even doesn't take that longer to cook. जितना बासमती राइस जितनी देर कुक करने में लगता है उतनी देर फिर Sela rice को कुक करने में लगती है, and it still remains long. टूटते नहीं है चावल. यू नो, जब आप पक जाते हैं ज़्यादा, जब आप घुमाते हैं चावलों को तो वो टूट जाते हैं, वो मुशी हो जाते हैं और वो खिले खिले नहीं रहते. तो when you're using Sela rice that have been soaked for hours before cooking, टेस्ट भी नहीं रहता, and you sort of are sure कि ये जो है ना ये टूटेंगे नहीं. So your चावल are more likely to end up khila khila, and by soaking it for more hours, you leave that aftertaste of Sela rice behind. My number 4th tip is to season the water that you're using to boil the rice. Now, season the water not with a lot of salt, but also with a few cinnamon sticks or with बादियान के फूल, a couple of बादियान के फूल. And मुझे ये चीज़ें मुंह में आते हुए अच्छी नहीं लगती बिरयानी में. Just rinsing the chawal out, I just pick those things off and just discard them. इससे होता है कि मुंह में नहीं आती, क्योंकि बिरयानी में इलायची और गरम मसाला आता है ना तो ख़राब हो जाता है टेस्ट बिल्कुल. जो चावल जो है ना वो कैसे पता चलेगा कि बॉयल हो गए कि नहीं हुए और कितने 80% कितने होते हैं. When you see like a lot of them coming ऊपर पानी के, then that means कि they are done. So now when you're cooking it with basmati rice, it might be too late if like a lot of them are coming up. So you have to quickly like strain them.
That's why I love using sela rice for biryani, is because you can just, मतलब ऐसा नहीं कि बॉईल कर करके उसको खीर बना देना है, बट जस्ट व्हेन दे स्टार्ट लाइक, एक तो टॉप लेयर पहले ऊपर आती है, उसके बाद फिर ज़्यादा आने लग जाता है. यू विल बॉईल द राइस, यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग. माई नेक्स्ट टिप इज़ टू नॉट ओवर रिंस द राइस. आपने बेसिकली स्ट्रेन करना है, ओवर रिंस नहीं करना. राइस ने सारा फ्लेवर और सॉल्ट एब्जॉर्व किया हुआ होता है, और ओवर रिंसिंग से वो सारा का सारा फ्लेवर लूज़ हो जाता है. Now our seventh point is take the right kind of pan. Now when I say right kind of pan is the amount of biryani that you're going to use. अब बिरयानी जब दम भी होती है तो वो थोड़े से चावल और खिलते हैं, थोड़े और फूलते हैं. तो you don't want to take a small pan, you don't want to take an extra large pan. ऐसा pan लेना है कि जितना आपका मसाला है वो सारा कवर हो जाए बॉटम पे. Take a heavy bottom and a straight bottom pan which has a proper lid के पूरा अच्छे से दम हो जाए. अब जी 8th पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ ऑफ लेयरिंग बिरयानी. नाउ वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू से कि भाई मैं तो आधा कप चावल एक्स्ट्रा लेती हूँ, बिकॉज नीचे वाले चावल तो वैसे ही लग जाते हैं तो फेंकने होते हैं. My trick is to layer the gravy at the bottom. Then add all your fried onions and green chilies and everything else, all the goodness, and on top of that add your rice. अब इससे ये होता है कि आपके राइस में इतना मॉइस्चर नहीं होता जितना ग्रेवी में होता है. तो जब ग्रेवी एट द बॉटम ऑफ द पैन होती है तो इट हैज़ मोर चांस ऑफ सर्वाइविंग विदाउट गेटिंग बर्नड. Ninth tip, which is also important but it is something that I've learned from my mother, is to sprinkle freshly squeezed lemon juice on top of the rice. बिल्कुल ढक्कन लगाने से पहले बेसिकली. खोलते हैं दम तो वो खिली खिली खुशबू आती है, एंड एक्चुअली में खिले हुए होते हैं चावल. अब सबसे इम्पोर्टेंट 10th, हम 10 टिप्स पे पहुंच गए. हाउ टू दम एट द बॉटम, ताकि हमारा मीट ना जले और राइस ना जले इफ यू आर डूइंग द राइस ऑन द बॉटम थिंग. सो व्हाट माय ट्रिक इज टू गिव लाइक 3 to 4 minutes का दम on very high flame. While on the side, make a tawa hot on a medium flame, and then shift your biryani pan onto the tawa and give the rest of the dum for 15-20 minutes on it until side se धुआं nazar aaye. What happens is with the sliding of the tawa below the pan, वो जो तवा है ना वो सारी हीट ले लेता है and it doesn't get burnt, and that's your biryani done, yummy, ready to eat, ready to gobble. I hope you liked the tips and I hope you learned a couple of things, a thing or two from me today. If you did, comment below. Biryani for life, right? Stay happy, stay safe. I'll see you next time. Assalamu alaikum.